Hello dear students, today we are going to be talking about the level of preparation at which you are and then how to increase that level of preparation. Okay, so have you heard about Maslow's hierarchy of needs? The lowest level of need is physiological need. अगर आपके पास खाना है, पीना है, you have a roof on top of your head, you have clothes, that is the most basic level of need. वो need met होती है. उसके बाद the next need that you have is the safety need. अगर आपके पास कपड़े ही नहीं है, खाना ही नहीं है, roof ही नहीं है, तो आप safety के बारे में your need is not that. आप पहले वो चीज सिक्योर करेंगे. Next thing, you go for safety. Once you know you are safe, आपके ऊपर कोई danger नहीं है, then your next need is love. अगर आप safe ही नहीं है तो आप love नहीं चाहते हैं, right? Then after that, when you are safe, you also have some love, you have family, you have a dog, you have a cat. Then after that you go for esteem. Esteem means success, and once you have that esteem needs, you have that success also, then after that you go for actualization, self actualization, right? So that is the Maslow's hierarchy of needs. I was thinking about this, and based on that I kind of thought about students in general also. हम चाहते तो हैं कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, हम चाहते तो हैं कि हम डेली 12 घंटे पढ़ाई करें, बट वो होता नहीं है. Why doesn't it happen? Because for us also as students, there are certain needs for us and we have to meet those needs to get to that highest point. वो highest point पे जहाँ आप एकदम अनडिस्ट्रैक्टेड तरीके से फोकस कर पा रहे हो, पढ़ाई कर पा रहे हो, वो लेवल तक पहुंचने के लिए देयर आर सम लेवल्स दैट यू हैव टू क्रॉस, देयर आर सम नीड्स दैट यू हैव टू सैटिस्फाई. फर्स्ट नीड फॉर अ स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव इज यू शुड हैव द एबिलिटी टू सिट डाउन एंड स्टडी. फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हम लोग जब प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारी तो आदत ही नहीं है बैठने की. पूरा 2-2 घंटा 4-4 घंटा एक ही जगह पर बैठ के बस पढ़ते रहो. हमारी आदत ही नहीं है, बिकॉज वी कीप रोमिंग अराउंड, वी कीप हैंगिंग आउट हियर एंड देयर, वी आर गोइंग टू आवर ऑफिस, वी आर गोइंग फॉर आवर आर्टिकलशिप एटसेट्रा. तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट दैट हैबिट ऑफ सिटिंग. और हाउ टू क्रिएट दैट हैबिट ऑफ सिटिंग? यू हैव टू एक्चुअली सिट डाउन एंड प्रैक्टिस. सो आपको 2-2 घंटे के स्ट्रेच में बैठना पड़ेगा किताब के साथ और कोशिश करनी पड़ेगी दैट यू एक्चुअली स्टडी. हो सकता है उस टाइम पे आपको कुछ समझ में ना आए पढ़ाई में. ओके, हो सकता है आप 2 घंटे बैठे हो और एक्चुअली आपने सिर्फ 5 ही पेजेस पढ़े हैं, बट दैट टाइम यू आर वर्किंग ऑन योर एबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्गर आवर्स एंड ट्राई टू फोकस. यहाँ ना कुछ हर्डल्स आते हैं जनरली स्पीकिंग. ओके, अगर you are in this category where you're not even able to sit for 2 hours, 3 hours, then probably आप lowest level पर है. You have to fix this. How can you fix this? Okay, you have to understand what are the hurdles that are coming. Generally speaking, in this case, आपके जो hurdles आते हैं वो हैं that you are distracted. Okay, so you are addicted to social media. You are addicted to that friend of yours. For many people, इस level पे there are some issues also that are there. Okay, it could be their relationship issues, it could be some mental health issues, basically some personal stuff that is coming in the way. हो सकता है आपको आर्टिकलशिप जाना है, आपको जॉब जाना है, वहां पे टाइम आपका स्पेंड हो रहा है. हो सकता है यू आर मैरिड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू हैव किड्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स. वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो यहाँ पर आपको ये चीजों को फिक्स करना पड़ेगा. आपको रूटीन ऐसा सेट करना पड़ेगा कि आप जॉब टाइमिंग के अलावा वेन आर द डिफरेंट टाइम्स दैट यू आर गोइंग टू सिट. इफ यू हैव आर्टिकलशिप, देन हाउ आर यू गोइंग टू स्टडी आफ्टर एंड बियॉन्ड दैट. इफ यू हैव किड्स, then what is the time that you will be away from the kid and you will simply sit down and study, etc. If there are mental health problems, then figure them out, fix them out, get therapy, get somebody's help, etc. So you have to fix those problems. Once you fix those problems, then you create this practice of sitting for longer hours. Once you do that, then आपकी वो basic need first satisfy हो जाती है. फिर उसके बाद आती है आपकी second need, which is to create interest in the subject. अगर आपको बैठने की ही एबिलिटी नहीं है with the books, then how are you going to sit down and enjoy that subject? The second need is to be able to enjoy the subject. How are you going to enjoy the subject? जब आप पढ़ते हैं, whether it is law, audit, accounts, costing, anything, तो you have to understand those subjects. You have to think about the practical applicability of those subjects. कि भाई साहब ये जो फॉर्मूला है ये ऐसा ही क्यों है, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, किन किन फैक्टर्स को कंसिडर किया गया है, अच्छा ऐसा है क्या, बट ऐसा भी तो हो सकता है. You have to think in those ways. When you're sitting down and studying law, आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ रहे हैं, यू शुड बी सो इंटरेस्टेड इन इट कि आप एक बार के लिए तो गूगल कर लें कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग के कितने तरीके पॉसिबल हैं, राइट? जस्ट टू बी इंट्रीग्ड बाय दैट आइडिया. बेस्ड ऑन दैट आइडिया, नाउ यू आर सो इन्वॉल्व इन दैट सब्जेक्ट कि आप वो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, उसमें की चीजों को अंडरलाइन भी कर लेते हैं, उसके नोट्स भी बना लेते हैं. यू आर सो स्ट्रांग इन इट. दैट इज द सेकेंड लेवल ऑफ स्टडिंग. And that is the level that you have to reach.
Once you get to this level, इसके ऊपर भी एक और level है. Okay, once you get to that level where you're interested in the subject, you're fully understanding them, grasping them, you're enjoying them, you're making notes of them, you're doing study in such a way कि आपकी second reading, third reading जो है वो और ही strong हो जाएगी. That is when you're going in the right direction. That is your second level of preparation as a student. Now, what is the next level of preparation? Post that, it is the expertise or the mastery which I call it. Okay, so एक बार आप ये second level को clear कर लेते हैं, then you got to be an expert in every single subject. कहने को तो हमें 50 नंबर ही चाहिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स में मिलाकर, बट हर सब्जेक्ट को पास करने के लिए 40 चाहिए, ठीक है. बट स्टिल यू गॉट टू बी एन एक्सपर्ट इन अ फ्यू सब्जेक्ट्स सो दैट आपकी उनमें एग्जामिनेशन आए, if not in all the subjects, and so that you are able to get that 50 ka score. Okay, so you have to get this expertise. How are you going to get this expertise? Expertise comes when you revise everything, when you revise those notes. And then after that, you do those exam papers. आप एनालाइज करते हैं that किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के केस स्टडीज बन रहे हैं. फिर जब आप रिवाइज करते हैं, यू आर थिंकिंग कि अच्छा इस पे इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट है. अच्छा सेक्शंस लिखेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. केस स्टडीज कैसे याद रखें. अच्छा केस स्टडी के अंदर ये जो लाइनें हैं, द फाइनल जजमेंट्स, दे आर मोर इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हेन यू बिकम एन एक्सपर्ट इन द एग्जाम, एंड यू हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट इन दिस एग्जाम एंड द काइंड ऑफ पेपर दैट इज गोइंग टू कम इन एवरी सिंगल पेपर ऑफ योर एग्जामिनेशन to pass this examination. तो आप सोचिए आप कहाँ पे हैं, कौन से लेवल पर हैं आप. Are you at the level जहां आप बैठ भी नहीं पा रहे, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, तो आगे की बात तो दूर की बात है. पहले आपको यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स को फिक्स करना पड़ेगा. And then after that you have to see if you have the capacity to sit down, then do you have interest in the subjects. Okay, and if you do not have interest in the subject, then create that interest in the subject. Love those subjects. Okay, and then post that there is going to be an expertise which you will have to get. After that, you are going to definitely pass the examination. अगर आप में से किसी ने कभी जिम किया है, if you have been to the gym, you know that initially it might be difficult for you to lift that 10 kg weight. But if you keep practicing, your muscle, first of all, it breaks down, it hurts, then it builds up again, and then you're able to lift that 10 kg very easily. And then you have the capacity of lifting 20 kgs also. But फिर वो 20 किलो उठाने में फिर से दुखता है, फिर से muscle tone हो जाता है, and then it builds up again. So it's just like that. Okay, your brain is also a muscle. The more you exercise it, the more you push it, it is going to hurt, obviously, but then it is going to develop. And based on that, you will be able to study better. आपकी capacity बढ़ जाएगी. So you just gotta flex those muscles more. Okay, I hope this video helps you. I hope this analogy helps you in understanding at which level you are of preparation and how you gotta fix that, how you gotta raise yourself. Also, if you have any comments, any suggestions, any opinions, please do that discussion in the comment section below and subscribe to this channel. I'll see you again. Bye bye.